Okay. Now I want you to look at that, and I want you to tell me, and remember, we're not talking about success just in FLP here. We're talking about success in all walks of life. We're talking about success in business, success in sport, success in being a teacher, success in being a mum, success in being a swimming coach, success in being a no. What's more important in being successful in life? Is it skills or attitudes? Absolutely, and each and every one of you should understand that one of the things you must do every single day is develop yourself. आपने इतनी सारी क्वालिटी देखी है ये सक्सेसफुल लोगों के बीच में, ये जरूरी नहीं कि जो एफएलपी में सक्सेसफुल हैं, चाहे वो क्रिकेटर आपने देखा है, चाहे वो मदर हैं या कोई टीचर है, ये क्वालिटीज आपने देखी कि जो ज़्यादातर क्वालिटीज आपने ही बताई हैं वो एटीट्यूड हैं। तो आपको रोज वो काम करने हैं कि जो आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी सहायता करें। I have met many successful people, and I can honestly tell you that it is what they have up here, that 6 inches between their ears, that is the most important thing to helping them become successful. It's not skills they've learned. I know plenty of accountants, bookkeepers, and I'm sure you all know bookkeepers. I'm sure you all know lawyers. I'm sure you all know doctors. Why do some of them become hugely successful and some of them just stay as accountants or lawyers, just bouncing along at the bottom of that career structure? इन्होंने बहुत से सक्सेसफुल लोग देखे हैं या आपने भी देखे होंगे। जो असली फर्क होता है वो इस सोच पे होता है। कहते हैं जी एवरीथिंग इज बिटवीन द 6 इंचेस, जो कुछ भी है वो यहाँ पे है, सोच में है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत सक्सेसफुल अकाउंटेंट होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी डॉक्टर्स होते हैं। जो फर्क है वो सिर्फ सोच में है कि उनकी सोच क्या है। In 2001, I ran the London Marathon, which is 26.2 miles. And that was my midlife crisis, because I hit 40, and my midlife crisis, instead of running away, I ran the marathon and got a tattoo. But I'd never run more than 16 miles before the day I ran the marathon. 2001 में लंदन मैराथन हुई थी और जब ये 40 साल इन्होंने पार किए ही थे, इन्होंने 26.2 माइल्स की मैराथन पूरी की थी। इनका कहना यह है कि उससे पहले जब भी ये कभी दौड़े थे या इन्होंने कभी मैराथन दौड़ी थी, उन्होंने कभी भी जो है 16 माइल से ज़्यादा कवर नहीं किया था। So when I got to 16 miles, for me that was uncharted territory. तो जब तक जो उन्होंने 16 मील तक किया था उन्होंने, वो उनके लिए मतलब वो एक टेरिटरी थी, वो उससे ज़्यादा वो दौड़ नहीं सकते थे, कहने का मतलब। My body didn't know what to do, but because I'd worked on my mind and because for 6-8 months I'd been telling myself I would finish the marathon, my mind would not let my body give up. जो है उससे पहले ये 16 मील तक ही दौड़े थे, परंतु इन्होंने अपने दिमाग में सोचा या अपने दिमाग को ट्रेन किया कि ये जो है जो मैराथन है जो 26 मील की है वो दौड़ सकते हैं। हो सकता है उनका शरीर साथ ना दे, पर उनको अपने दिमाग से वो अपने को दुरुस्त कर रहे थे। Obviously I was much slimmer then. Okay. Like Simon. But you know, the Olympics are coming up this year in China, in Beijing. When we see the athletes from each country appearing in their event, do you think the athletes we see there are the most naturally talented in that event from that country?
अभी ओलंपिक होने वाला है, चाइना में होने वाला है, आपको पता है बहुत से एथलीट्स आएंगे वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है वो मोस्ट नेचुरल टैलेंटेड एथलीट्स हैं क्या? No. I don't believe they are. I think that most of the most naturally talented ones couldn't, perhaps somewhere along their careers, couldn't be bothered to train. They didn't turn up. They weren't doing enough to keep themselves successful. The people that we see competing in the Olympics are the people who get up every morning, they train every day, and that's what makes the difference. They have the right attitude up here. जो ओलंपिक्स में आप लोग देखोगे वो स्पेशली एक इसी ट्रेनिंग के लिए तैयार किए गए लोग होते हैं। वो नेचुरली टैलेंटेड नहीं होते। वो रोज सुबह उठते हैं, वो इसकी तैयारी करते हैं, और वही लोग होते हैं जो इन्होंने एक अच्छी खासी एक तैयारी कर रखी होती है। One of the reasons I love sport is because every time I watch sport, you see athletes, sports people, footballers or rugby players or cricketers who are striving to achieve excellence every time they go onto the field. ये स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये स्पोर्ट्स पसंद करते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्समैन जो होता है वो पूरी अपनी ताकत लगाता है एक एक्सीलेंस पाने के लिए कि उसको सफलता मिले ही मिले। How many people read in the paper the other day that Adam Gilchrist, the Australian batsman, scored the fastest century in 20-over cricket in history? How many people read that? एडम गिलक्रिस्ट ने अभी आईपीसी में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। हाउ मेनी बॉल्स? 42 balls. 42 balls. What was very interesting to me, though, about the newspaper report was not talking about his innings. It was saying that right up until the beginning of the match, Adam Gilchrist was in the nets practicing his keeping and practicing his batting. And he was the last person to leave the nets before the game started. जो है जब इनके बारे में लिखा गया कि इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, तो ये नहीं लिखा, इसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उनको बताया गया, मतलब पेपर में लिखा गया था कि जब इन्होंने प्रैक्टिस की थी तो वो कीपिंग की प्रैक्टिस और बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक कर रहे थे। तब तक कर रहे थे जब तक सारे प्लेयर्स जा भी चुके थे। Has anyone ever heard of the golfer Gary Player? Gary Player once said, "The more I practice, the luckier I get." This our president is also telling, sir. Mr. Rex Bond is also telling the same thing. Exactly. जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको नहीं लगता अपने जीवन में कि आप ज्यादा लकी होते जा रहे हैं? ऐसे लगता है कि नहीं? You know, people say to me, "Oh, you're so lucky to have a successful business in forever." You're so lucky to have a double diamond in your downline. You're so lucky to have 2 diamond sapphires in your downline. You're so lucky to have 10 sapphire managers in your downline. Do you think that's luck? No. That's because I practiced a lot. And I made lots of mistakes, but I kept practicing. And you know what? I am still practicing today. Because the minute I stop practicing is the minute my business starts to die. Yes, लोग आज डेट में आज कहते हैं कि एडम जो है बहुत लकी हैं, इनके नीचे एक डबल डायमंड है, इनके नीचे बहुत से सफायर हैं, इनके नीचे बहुत से डायमंड सफायर मैनेजर्स हैं। ये रीज़न नहीं है इनके सक्सेसफुल होने का। इनका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो इनकी प्रैक्टिस है, जो उन्होंने पिछले कई सालों में की है। और ये कहते हैं कि आज की डेट में भी ये प्रैक्टिस उतनी करते हैं जैसे पहले करते थे, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस छोड़ी उस दिन मेरा बिजनेस भी जो है वो कम हो जाएगा। I'm going to give you a tip. When you're looking for a leader in network marketing, when you're looking for somebody to mentor you in network marketing,
find somebody who is actively building a business. आप हमेशा एक खोज में रहते हैं, नेटवर्किंग में विशेष रूप से होता है कि आपका आदर्श पुरुष कौन है, किसको आप आदर्श समझ के चल रहे हैं, किसकी तरफ आप देख रहे हैं कि ये आदमी को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा। तो दोस्तों, उस आदमी को फॉलो करो जो कि प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिस कर रहा हो, जो है एक्टिव हो। हमारे बिजनेस में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। Because unfortunately in our industry, there are lots of people who build businesses, successful businesses, and then they continue having a successful business, but they're not practicing. And yet they still want to stand on stage and tell everyone how to do it. And let me tell you that unless you're practicing, you shouldn't be on stage telling people how to do it. Exactly. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा नेटवर्क बढ़ाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, एक अच्छा पिन भी मिलता है, बहुत अच्छा औहदा भी मिलता है, पर वो लोग एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव रहना एडम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो स्टेज में आए और वो सबको बताएं कि ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, जबकि वो खुद एक्टिव नहीं। Last year I sponsored 30 people into my business, personally. This year so far I've sponsored 10 people into my business. And my goal this year is to sponsor at least 3 people a month. इन्होंने पिछले साल 30 लोग किए थे। अब इनका जो टारगेट है कि हर महीने कम से कम 3 नए लोग अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें। So if you want to find somebody to learn from in this business, ask them how many people they've sponsored in the last 3 months. And if they tell you, well, I haven't sponsored anyone, but I've got a big team, then I don't think they can teach you very much. इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप किसी को पूछ के कि पिछले 3 महीने में आपने कितने नए लोग अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए। ये जरूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़ी टीम हो। लोग कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी टीम है, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है। देखने वाली ये बात है कि आपने पिछले 3 महीने में कितने लोग पर्सनली स्पॉन्सर किए हैं, उससे पता लगता है कि आप कितने एक्टिव हैं। You need to find somebody who's at the coal face. Yeah, coal mine? In a coal face? Coal mine. Well, at the face, digging the coal. Okay. You need to find somebody who's working at the coal face. Coal face is a coal mine. Coal mine. Yeah, but actually, तो मजदूर जो है कि who's कोयले की actually खदान में digging काम the करता है, coal. जो कोयले की खदान में काम करता है, जो कोयला निकालता है। Does that make sense? Yeah? Okay, so let's talk about these attitudes for a moment. There are lots and lots of books that you can read that will help you to develop you. And here's some of them. First thing you need to understand is a positive attitude, a learning attitude, and a business-like attitude. Let's talk about this learning attitude. How many people have read a book called Think and Grow Rich by Napoleon Hill? Think and Grow... Who hasn't read Think and Grow Rich? Put your hands up if you haven't read it. Don't be embarrassed. Some of you may be new to the industry. Okay. What does the title say? Does it say, work hard and grow rich? What does it say? Think and grow rich. You know, the secret to success is not just about working hard. When he says think and grow rich, he means use your brain in the right way, in a positive way, not in a negative way. Everyone should read Think and Grow Rich. नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं इस किताब के बारे में। ये किताब जो है एक रिसर्च की तरह है, इट्स ए रिसर्च पेपर बेसिकली। 25 साल में ये लिखी गई थी किताब। Dale Carnegie. Who's heard of Dale Carnegie?
Yep, How to Make Friends and Influence People. A fantastic, absolutely fantastic book. One of the best books ever written. Claire, my wife, read that book, and at the end of it, she turned to me and she said, "This book is full of ancient wisdom." Exactly. परंतु जहां तक बात है थिंक एंड ग्रो रिच, जहां तक मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात है, एडम का कहना है कि जिसने किताब नहीं पढ़ी है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए थे जिन्होंने किताब पढ़ी है, पर उनका कहना है कि अगर जिसने किताब ये नहीं पढ़ी है वो दुर्भाग्यशाली आदमी है। ये किताब जो है वो हिंदी में भी आ चुकी है। अगर जिन लोगों को थोड़ा कठिनाई है इंग्लिश पढ़ने में, दोस्तों इससे अच्छी किताब मेरी समझ से भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए कोई किताब नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एटीट्यूड है उसको ठीक करती है। ये किताब ये नहीं बताती है कि वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच, ये कहती है थिंक एंड ग्रो रिच बेसिकली। तो ये जो बात कर रहे हैं बार बार कि विद इन द 6 मंथ्स, ये इसको मजबूत करती है। तो ये किताब जो है अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो दोस्तों ये समय है कि आप जो है इस किताब को जस्ट प्रिपेयर ए कॉपी ऑफ इट और इस किताब को जल्दी से जल्दी पढ़ें। इस किताब को पढ़ने का एक और तरीका है कि आप जब इसको खत्म कर लें, कोई भी पेज खोलें, open any page and just go through and it will inspire you like anything. जी बोलिए। How about, anyone here ever heard of Anthony Robbins? Yeah. Anything by Anthony Robbins? आपने नाम सुना है एंथनी रॉबिन्स का? Anything by Anthony Robbins? Very good trainer. Awaken the giant within. Has anyone here heard of, who else has got some favorite self-development authors? Zig Ziglar. Who's heard of Zig Ziglar? Anything by Zig Ziglar? That's not working. Rhonda Byrne. Anything by Rhonda Byrne? Eat That Frog is by John C. Maxwell. Jim Rohn. John C. Maxwell. Jim Rohn is a genius. The An ultimate. absolute genius. Robin Chapman. Sure. Robin Sharma. Oh, is that an Indian author? Robin Sharma. I've American never read Indian. him, but I'm going to put him down just because he's Indian. Robin Sharma, American Indian. He has written The Monk Who Sold His. The Monk Who Sold His Is that Ferrari. right? The monk who sold his Ferrari, yeah. Okay. There are lots and lots of books you can read, and if you don't like reading, then there's lots of CDs you can listen to. ये नोट करिएगा प्लीज, ये जो किताबें लिखी हैं ये आपको People in America, they call, if you put tapes on in your car, people learn languages. They call it automobile university. Adam, there is a very good Indian writer also, Yes. Shiv Khera. His name is Shiv Khera. How do you He's spell written a Khera? beautiful book, You Can Win. जीत आपकी. He's written a beautiful book. Shiv, जीत आपकी एक Yeah. हिंदी में किताब है, शिव खेरा जी. शिव खेरा, KH. SHIV. Shiv Kira. हाँ, Okay. जीत आपकी, You Can Win. Listen, there are hundreds and hundreds of books about getting this bit right. And this is the bit you need to get right. I'll tell you something. If you get this bit right, it doesn't matter about how you get customers. It doesn't matter about how you make a phone call. It doesn't matter about how big your business is. Because if you get this right, everything else will follow. आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से मजबूत एक बार हो गए, ये किताबें ही मजबूत बनाती हैं आपको, यही आपकी सोच बदलती हैं, और एक बार आप मजबूत हो गए दिमाग से, आपके मानसिक पटल में आपने एक अलग चीज लिख दी, तो दोस्तों ये जो कंप्लेंट्स होती हैं छोटी छोटी कि कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मीटिंग में नहीं आता है, कोई फॉर्म नहीं भरता है, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, ये सब चीजें बेनामी से लगती हैं. Throughout history, you can find examples of people who got this right and went on to do great things. And you can too, if you work on this. Let's talk about a business-like attitude. What do we mean by business-like? Well, for a start, you have to keep track of all of your prospects.
So you know I was saying we use the prospect sheet to fill in all the details. We have an A4 file, and we have dividers in there, 1 to 31 for the days of the month. And then we have other dividers in the back, 1 to 12 for the months of the year. So I might speak, or Claire might speak to a prospect today, and they might say, yes, really, really interested in Forever, but my mum's going into hospital for an operation, so I won't be able to do anything until June. Can you give me a ring in June? So we will take that sheet and we'll put it into the file for June. And then when June comes, we'll take it out of the June and we'll put it in the days section. सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बिजनेस लाइक एटीट्यूड। अभी हमने एटीट्यूड की बात की है। एटीट्यूड आपकी सोच है, समझ है, आपका एक नज़रिया है। ये नज़रिया जो है आपका जब एफएलपी के लिए बिजनेस लाइक एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप रियली में इसको ऐसे बिजनेस देखते हैं तो आप जो है लोगों का प्रोफाइल रखेंगे, उनकी एक रेडी शीट रखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, ट्रैक शीट जिसे बोलते हैं। आप जो हर एक आदमी का एक ट्रैक शीट रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को फ़ोन किया और उसने कहा कि भाई अभी मैं जून तक बहुत बिजी हूँ, मेरी मदर का ऑपरेशन है, मैं उसके बाद ही आपसे बात कर सकती हूँ, तो आपने जो है वो ट्रैक शीट को जो है जून वाले फोल्डर में डाल दिया, क्योंकि आपके 12 महीने के जो कार्ड्स हैं, फोल्डर्स हैं, ट्रैक शीट्स हैं, वो अलग अलग आपने लगा रखे हैं। तो जैसे जून आता है आपको पता लग गया कि ये आदमी फ्री हो गया है, आप इससे बात कर सकते हैं। A business-like attitude is about turning up to a meeting with a prospect with all the literature. Not just the business literature, but the product literature. Because you may be going for a business meeting, but very quickly they might say, I'm not interested in your business. But those products sound interesting. And then you haven't brought your product literature with you. So you're going, well, we've got really good products, but unfortunately, I haven't got anything with me. Can I get it to you later? And you've lost the moment. You've lost the opportunity. तो अगर आपका ये दुरुस्त है, दिमाग से दुरुस्त है कि आप बिजनेस लाइक आपका एटीट्यूड है, तो आप जब किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपको लिटरेचर है आपके पास, आपने एक बिजनेस मीटिंग करनी है उसके साथ। जब बिजनेस मीटिंग करनी है तो आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए, सीडीज होने चाहिए उसको देने के लिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए और उस आदमी ने कहा मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। परंतु हाँ, आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, आपने जो बताया प्रोडक्ट के बारे में, आप प्रोडक्ट दिखाओ। बट जब उसने कहा प्रोडक्ट दिखाओ तो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है दिखाने को। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एटीट्यूड है वो बिजनेस लाइक एटीट्यूड नहीं है उस टाइम पे। It's about turning up to all the trainings. And I'd like you all to give yourselves a huge round of applause for coming up here today for this training. This is for you. Because think of how many people were in the rally yesterday. And I agree that some people may have jobs to go to today, or they may have families to look after. But look how many were in the rally yesterday and how few people are here today. And that's why you deserve congratulating yourself. So give everyone next to you a pat on the back. Give the person next to you a pat on the back. Oh, Japan. Big thumbs up for everyone. Shetty. Listen, if you started a brand new job and your boss said you had to go to a training once a week or they would fire you, would you go to the training once a week? Who would go to the training once a week if they'd started a new job and their boss told them to go? Can you translate that? Okay. If you started a brand new job and your boss said you had to go to a training once a week, how many people would go to that training? अगर आपने नई एक सर्विस ज्वाइन की है और आपका बॉस कहता है कि आपको एक ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? Everyone would. And yet, in Forever, you've got your business. It's your business. It's not my business. It's not Rex's business.
It's not Amarjit's business. This is your business. And yet lots of people start their forever business. They go to one training and they think they know it all. जो है ट्रेडिंग में, जैसे आपने सभी ने बताया कि फॉरएवर भी वैसे एक नया बिजनेस है. You can crack jokes afterwards, please. Yeah. फॉरएवर भी एक नया बिजनेस है. जब हम ट्रेनिंग के लिए कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भी ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं होते, या एक ट्रेनिंग देख ली तो ये कहते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया. Do you know, I see people join this business, they turn up to one training, and then I say, why don't you come to this? Or they turn up to one success day, and I say, why don't you come to the next success day? And they say, oh, I've seen a success day. I don't need to go to that success day. Oh, I've been to a training, I don't need to go to any more trainings. I've read a book, I don't need to read any more books. But it's your business. And if you don't go to the trainings, if you don't read the books, if you don't go to the success days, the only person it's affecting is you. लोग जो है बोलते हैं एक ट्रेनिंग देख ली, एक सक्सेस डे देख लिया. हाँ, देखा हुआ है. कभी आप बोलते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग है हमारी, बड़ी अच्छी एक सोनिया कलर कलेक्शन की ट्रेनिंग है, या हमारी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है हमारी, बहुत हमारी नेट की ट्रेनिंग है. कई बार हमारी नेट की ट्रेनिंग होती है, हम कभी बुलाते हैं लोगों को, नेट की ट्रेनिंग है, लोग कहते हैं हाँ देखी हुई है, नेट की ट्रेनिंग देखी हुई है. दोस्तों बात ये नहीं है कि वो अपलाइन कह रहा है, अपलाइन इंटरेस्टेड है. ये अपलाइन के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये मिस्टर रेक्स वॉन के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये मिस्टर अमरजीत ओभी के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है. ये आपके इंटरेस्ट की बात हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल होना चाहता है. इसलिए जो है ट्रेनिंग्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सक्सेस डे हो, चाहे हमारे रेगुलर ट्रेनिंग्स हो. We invented success days in Britain. We invented the success day because they didn't have them in any other country. We can clap for it. And I've been in the business since August 1993. Our first success day was in October 1993. And since October 1993 to now, I have only missed 5 success days. And I would only have missed 4 success days if my wife had let me go to the one the day after our wedding. But she wouldn't let me go. जो है सक्सेस डे जो आप देख रहे हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बेसिकली इंग्लैंड की इजाद है. उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था 1993 अगस्त में शुरू हुआ था वहाँ पे, और अक्टूबर 1993 में पहला सक्सेस डे हुआ था वहाँ पे. तब से लेके आज तक इन्होंने सिर्फ 5 ऐसे सक्सेस डे हैं जो जिसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हमेशा रहते हैं उसमें, क्योंकि इनकी शादी के बाद जो है वो इनको अलाउ नहीं किया गया कि वो जा सके वहाँ पे. Next day. Hey. In another success day. So, no, she made me go on honeymoon. Okay. But what I'm trying to say to you is it's not just me. All the leaders in the UK, we are all there every single month. And as soon as a leader stops coming to the success days, that's when I know their business is going, well, it may not go down, but it certainly doesn't grow anymore. Because as soon as I stop going, if I was to stop going to success days, but I was telling my people to go to success days, they would be turning around to me and saying, well, you're not going, why should I go? तो आपका जो ग्रुप है, जो टीम है, वो आपको देख के ही फॉलो करता है. आप एक एग्जाम्पल की तरह हैं, जैसे सक्सेस डे एक एग्जाम्पल है. अगर आप सक्सेस डे में आप ही नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे शायद कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर आप सक्सेस डे में नहीं जा रहे हैं, कुछ सक्सेस डे आपने अटेंड नहीं किए रेगुलरली, तो आपका जो बिजनेस है वो जैसे बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ नहीं रहा है. आप कहते हैं कि भाई सक्सेस डे में सबको जाइएगा, सब डाउनलाइंस को फ़ोन करते हैं, टिकट ले लिया कि नहीं ले लिया, परंतु जब आप ही नहीं जा रहे तो आपके डाउनलाइन या आपका जो ग्रुप है वो कैसे जाएगा वहाँ पे? दे विल फॉलो यू ओनली.
I just want you to write this all down, or all of you to write this down, sorry. I better turn it on then.